I don't understand. Such a huge country cannot solve the problem of the fishermen. All this is happening because there is no seriousness. Our foreign minister, and so what a shame. Our foreign minister read the speech of another country. क्या साहब बताइए, इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम में हमारे देश का विदेश मंत्री दूसरे के डोलने के पड़ रहा है। 3-4 पेज पढ़ने के बाद पता चला कि मैं तो हिंदुस्तान का विदेश मंत्री हूं। मित्रों, यानी किस को क्या कहे। Recently, the foreign minister visited China in a time of Chinese aggression. यानी हमारी सीमा पर चाइना घुस गया जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी, उस समय और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। चाइना जाके क्या बोले? And he made a statement that he likes Beijing so much that he wants to stay there. ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है। चाइना आपके यहां घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा, मैं वहीं रह जाऊं। काश ऐसे लोग वहीं रह जाए। इस देश को कोई जरूरत नहीं। क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? That is not a policy. It's a mockery. This has to be changed. इसके बदलना होगा। For that, the immediate thing which needs to be done is to take ourselves, our country, and our job seriously. यानी आपको आश्चर्य होगा, इतना करने से वहां मिल गए, इतना करने से भी हो जाएगा। सब कैजुअल चलता है। There is no seriousness at all. They don't think that these are the issues. Secondly, to show to the world that India is vast and India is powerful. India is not just a Delhi. Note down. India is not just a Delhi. Foreign policy has to be driven by people, not big politicians sitting in Delhi. A time has come when the cultural and economic strengths of different states have to be leveraged for building our global positioning. It was because of local initiatives that our predecessors developed relations with foreign countries. States have to be encouraged in partnering with foreign countries. In Gujarat, we have partnership with Japan and Canada for our vibrant Gujarat event and other economic activities. Similarly, it could be on cultural and language basis like Goa and Portugal, Pondicherry and France. मित्रों, मैं एक विषय ऐसा आपके सामने छेड़ रहा हूं। इतना बड़ा देश है, हमारे विश्व के साथ संबंधों का संबंध क्या सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से होगा क्या?
Is it possible? Is there any role of the states? Nowadays, we see that our states, by and large, they mainly function in body. But we don't have any responsibility in our global relations. I have a few suggestions. अब जैसे मान लीजिए हम सोचिए कि हमारे करीब 30 राज्य हैं। एक राज्य को एक देश दिया जाए कि भाई तुम उसको संभालो। वो संभाल सकता है नहीं संभाल सकता है? अगर तमिलनाडु को कहा जाए टू टेक केयर ऑफ वन कंट्री इन द वर्ल्ड, कैन दे टेक केयर ऑफ नाउ? 30 वोट तो आपके पक्के हो गए। ग्लोबली 30 कंट्रीज के साथ आपका घनिष्ठ रिलेशन इन स्टेट के कारण बन सकता है। और फिर उस स्टेट के अंदर जिस देश के साथ उसको जोड़ा हो उसके लैंग्वेज क्लासेस चलें, 500,000 टीचर्स उस लैंग्वेज को जानने वाले तैयार हो, तो हमारे 30 राज्यों में 30 देशों की लैंग्वेज जानने वाले अगर 500 टीचर्स तैयार होते हैं, तो आप कल्पना कीजिए दुनिया में हम कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। बहुत ही, और ये कोई कठिन काम नहीं है मित्रों, कठिन काम नहीं है। सवाल है विजन, स्ट्रेटेजी एंड विल टू इंप्लीमेंट। अब कर सकते हैं। Why can't international conferences be held in states? सब कुछ दिल्ली में होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आया, दिल्ली में मिला, गया और 4 रास्ते देखे चला गया। मुझे बताइए, मानो कि कल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आते हैं और उनकी 2 दिन की मीटिंग चेन्नई में ही होती है। प्रधानमंत्री आएंगे, भारत सरकार आएगी और चेन्नई में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा पहले से तैयार करो। इवन तमिलनाडु की ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सपोजर मिलेगा, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। कभी आप टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, आप बनारस के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गए, किसी देश के मेहमान आ गए, कॉन्फ्रेंस वहां की, बनारस साफ सुथरा हो जाएगा, सफाई होगी, कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी, वो फायदे रहे। और दुनिया में बनारस 1 हफ्ते भर चलेगा। कर सकते नहीं कर सकते? पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति आए थे तो अटल जी ने मीटिंग आगरा में की थी। इंदिरा जी ने भुट्टो के साथ मीटिंग शिमला में की थी। मित्रों, ये घटनाएं हैं, उन घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश का ब्रांडिंग भी हो सकता है, हमारे देश के स्टेट की ताकत भी बढ़ती है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाए किसी देश में, तो हिंदुस्तान के जिस राज्य का उस देश से नाता हो, वहां से उनको ले जाए। मित्रों, इतना सारा काम हो सकता है, लेकिन सारी दिल्ली के अंदर 4 चैम्बर के अंदर सारी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, नहीं होगा। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, मुझे एक बार रशिया ले गए थे, और रशिया में एक अस्ट्राखान करके स्टेट है, तो गुजरात का और अस्ट्राखान स्टेट का हमारा सिस्टर स्टेट के रूप में रिलेशनशिप है। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने कैसे दुनिया के साथ अपना काम किया है, देखिए। सरकारों का रोल नहीं रहा है। आज भी आप एशियन कंट्रीज में जाइए, आपको तमिल भाषी लोग इतने मिलेंगे और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मलेशिया में जाइए, आपको तमिल पीपल का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। आप मॉरिशस जाइए, बिहारी लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, गुजराती लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। यानी पीपल टू पीपल भी दुनिया में कितना बड़ा नाता हम लोगों ने जोड़ा था। When I went to अस्ट्राखान, मैंने चाय मांगी। When I said tea, they could not understand. In Russia, when I said chai, oh, you want chai? Chai ले आए। I said door, they don't understand door. When I said द्वार, oh yes, I understand द्वार। मित्रों, वाटरमेलन, I said तरबूज, yes, we used to word। यानी इतना इन्फ्लुएंस। मित्रों, वहां पर मैंने कुछ शॉप्स देखी, शॉप्स का नाम था ओखा। ओखा गुजरात का एक
पोर्ट था, द्वारिका के पास है। मित्रों, आज भी अस्ट्राखान में, रशिया का एक स्टेट, वहां अगर विश्वस्त चीज खरीदनी है, क्वालिटेटिवली अच्छी चीज खरीदनी है, तो औखा जिस दुकान पे लिखा है उस पर आज भी लोग भरोसा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने दुनिया के साथ संबंध जोड़ने हैं, तो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से इस दुनिया के साथ अपने नाते जोड़े थे, उसमें से क्लू लेकर के क्यों ना हमारे राज्यों की ताकत को, हमारे सामाजिक शक्ति को हम इन सारे वैश्विक संबंधों के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, इस पर हमने चिंता करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं हमारे राज्यों में वो ताकत है कि अगर उनको एक छोटा सा देश दे दी गया, वो पूरी तरह उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, पूरी तरह संभालेंगे, और एक अपनेपन का भाव पैदा होगा। अगर दुनिया में 30 देश एक तरफा हमारी वकालत करने की ताकत बन जाए, मित्रों, दुनिया की किसकी ताकत है कोई हमें डरा सके? मित्रों, similarly, our people are then in almost all countries. Indians abroad have been a strength for our nation. They are our biggest ambassadors. We have to make use of them in this area more actively. At the same time, we have to take better care of them when they are in trouble. मित्रों, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हिंदुस्तान का व्यक्ति, आज उसका पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, उसका पासपोर्ट का कलर भले बदल गया होगा, हमारा खून का कलर बदलना नहीं चाहिए। हमारा खून का रिश्ता नहीं बदला जा सकता। पासपोर्ट का कलर बदला जा सकता है मित्रों, उस पर स्टैंप किसी और देश का लग सकता है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल इंडियन है तो हिंदुस्तान की जिम्मेवारी होती है कि उसके रक्षक के रूप में देश ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। At the same time, again I repeat, we have to take better care of them when they are in trouble, like the Tamil in Sri Lanka. Friends, I am an optimist. We have the strength of our character of not harming anyone. The magnetic power of India lies in its culture and traditions. Also, we are the biggest democracy, which is the flavor for the world today. Our human and natural resources are enough to influence the world if used properly. With this strength, I am sure India has to play and will play a major role in the world affairs. The present century is going to be the century of Asia. In that sense, with our brotherly policy, we would be able to contribute towards that. Also, with our traditional strength and modern initiatives, we will also be able to provide solutions to many global issues. And when I say by and large, the whole globe has accepted that the next century is Asia's century. It is accepted. But it is our responsibility that next century must be India's century. And we will have to perform
Friends, let us together work for a bold India and a better world, a harmonious neighborhood and a happier world, a strong Asia and a safer world. My personal conviction is that India can play a major role, and we must take oath that 21st century must be India's century. Thank you very much. Thanks a lot. Standing. Thank you, sir. May we now request Mr. N.L. Raja, trustee of the Palkhivala Foundation, to deliver the vote of thanks. Friends, it's my happy task to present the vote of thanks. The vote of thanks is that part of the function when the audience becomes increasingly restless and impatient. However, since Aditi Devo Bhava, meaning the guest is God, is a very cornerstone of our culture, I request you to bear with me for a few minutes while I thank the guests and all those who have made this function possible today. On behalf of the Palkhivala Foundation, I express my heartfelt gratitude, Shri Modi ji, for being with us today. In ancient times, Greece had Demosthenes and Rome had Cicero. It is said that when Cicero spoke, the audience said, "What a great speech." But when Demosthenes spoke, they said, "Let us rise and march." You can never listen to a speech by Shri Modi ji and sit back and merely say, "What a great speech." Because each of his speeches impels the audience to rise and march. And today, we had an excellent example of his oratorial skills. He has delivered today not merely a great speech, but a historical one. We are thankful to you, sir, for your cooperation in making this function possible. अपनों